Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you D.A.V Class 8 Chapter 7, 17 Fundamental Rights, Fundamental Duties and DPSP Directive Principle of State Policies. First question. The fundamental right that came into existence in 2002 is the right to equality, right to education, cultural and educational right, right to freedom of religion. The answer is B. Which right can be issued by a district court, a gram panchayat, a civil court and a high court? Answer is D. High court. Which of the following statement regarding the fundamental right is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड? जैसे फॉर एग्जांपल दे आर गारंटेड टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो करेक्ट है. वन कैन मूव टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी करेक्ट है. दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये भी गलत है, इसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में वायलेशन पर. दे आर जस्टिएबल, ये इनकरेक्ट है. द आंसर इज डी. राइट. सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी. कौन से प्रिंसिपल गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड हैं डीपीएसपी से? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ men and women, to organize village panchayat, to promote heavy industry, to promote international peace. The answer is B. पंचायती राज के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं. गांधी जी ने कहा था पंचायती राज का स्थापना होना चाहिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सेकुलरिज्म? कौन सी इसमें से सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है? तो आपको जानना है. नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, ये तो रिलेटेड नहीं है. इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी सेकुलरिज्म से रिलेटेड नहीं है. राइट टू एजुकेशन, ये भी नहीं है. कॉम्युनल हार्मोनी, हाँ, आंसर इज डी. कॉम्युनल हार्मोनी ये सेकुलरिज्म से रिलेटेड है. राइट. एक ही पेज दो बार. ओके. नेक्स्ट है द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन द इंडियन सेकुलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1947, 1964, 1976, 2002. फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2002. D. Which of the following is not a fundamental rights of the people? Right to change the fundamental ideals of the constitution, right to criticize the government, right to participate in elections, right to organize public meeting and rallies. ये सब है, सिर्फ है राइट टू चेंज द फंडामेंटल आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल आइडल्स को कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, कांट बी अमेंडेड. राइट. प्रोहिबिशंस मीन्स व्हाट? प्रोहिबिशंस मीन्स व्हाट? अ रिट to be more fully informed of, to prohibit or forbid, रोकथाम लगाना. ठीक है. An unlawful detention person may be produced before the court to find out whether the detention was legal or not. None of these. तो आंसर इज
Prohibitions means to prohibit or forbid. Okay, abolition of untouchability, ban on bonded labor, provision of child labor are included in right to freedom, right to equality, cultural and educational right, right against exploitation. To answer is D, right against exploitation. Fundamental duties were added to Indian Constitution through how 42nd Amendment. ओके 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया है। यस डियर चिल्ड्रेन, वन मोर क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्वेश्चन नंबर, fundamental duties were included in Indian Constitution in 1947, 1944, 2002। तो आंसर इज सी, नॉट डी। ये आंसर नहीं है, राइट। 1976 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, राइट। अब नेक्स्ट, the article of the Indian Constitution regarding the freedom of religion which fulfill the declared objective of secularism in India are, कितने आर्टिकल में सेकुलरिज्म के बारे में लिखा हुआ है? 20 to 23 आर्टिकल्स, 23 to 25, 25 to 28, 30 to 32। तो आंसर इज सी। ओके 25 to 28। द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रीएम्बल इन, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड किया था, जैसे 1974, 1975, 1976, 1977, 1976। By which amendment of the Constitution was the word secular introduced in the preamble? तो 42nd अमेंडमेंट, पहले भी डिस्कस हो चुका है इसको। इंडियन सेकुलरिज्म इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, नन ऑफ देम। इंडियन सेकुलरिज्म इज flexible, right? The wearing and carrying of a कृपाण is included in which religion से ये है? सिख, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी। तो सिख रिलीजन वाले लोग पगड़ी और कृपाण पहनते हैं, wearing and carrying a कृपाण, ठीक है। The legislative organ of the state, लेजिस्लेटिव का क्या काम है? मेक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नो। फ्रेम लॉज, मेंटेन ऑर्डर, एक्सिक्यूट द लॉ, फ्रेम लॉ। द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज, जुडिशरी का क्या फंक्शन है? तो हम जानते हैं, टू मेक लॉ, टू इन्फोर्स लॉ, टू इंटरप्रेट लॉ, ऑल ऑफ द एबव। टू इंटरप्रेट लॉ, कानून की व्याख्या करना। There are dash of the fundamental rights guaranteed to the citizen of India. How many fundamental rights? So they are 6 in number, right? Which of the following is a part of the right to freedom? Right of speech and expression, right to assemble peacefully, right to form association and union, all of the above. Answer is all of the above. Which, when and by which amendment right to property removed from the list of fundamental rights? 1978 42nd 44th amendment, 1976
44th Amendment, 1976 42 again Amendment, 1978 42 Amendment. To answer is A, 1917 44th Amendment. Right to information was given the status of fundamental rights in 2003, 2004, 2005, 2006, 2005. How many fundamental duties now in our constitution? 10 or 11, 12 or 14? To 11. Once again, thank you for listening and watching my videos.